30 को है ना अपने मैचेस, हाँ 30 को मैच आएगा अपने। Okay, so the three goats of all time right now. Number 2, Jonathan. To be honest, even back then, right, he was a guy that everybody was afraid of. So you once told me, like, you guys have this conversation in your international circuit that there are only 3 players who have, who you guys consider it the The goats of goats. Okay, so the three goats of all time right now for me. Number 1, Paraboy. Number 2, Jonathan. Number 3, Top. But then, like, it has been such a long time that Jonathan has not even played the international circuit. But why do you guys still consider him? Because to be honest, even back then, right, he was a guy that everybody was afraid of. Like Even the international. international, right? Because think about it this way: as a one man army, he's fighting as if it was a 4-man army. So it's very rare to see people like that in the global stage. And at that time, he was the best. Even now, he is still the GOAT. Because yes, people can say, oh, he's not played international or whatever bullshit. But think about it this way. Even after 4 or 5 years, people die off. People like, oh, after 2 years, they retire, getting old, blah, blah, blah. Now what? Jonathan is after so many years. He's still playing at the best. And he still got 2 second place twice in a row from BGIS, from BMBS. Is he still not the best? If you're not the best, you are not in the land at all. So I would say GOAT status, yes. But until he is back in the international scene, it's gonna be a different thing. So after so many years, you're still at the top. I still think he deserves a GOAT status for sure. Because not many esports players. You must understand the lifespan of an esports player is very short. Usually 7 years max, 9 years max. But Jonathan is still playing at the level, beating all these new kids. But I think we had this conversation behind the camera as well, and I think that was BGIS, right? It was like 2 months back, 3 months back. I think like this was the 3 best for me. There is a few up and comings one. Like I want to say BTR, Luxy Zuxy was a dynamic duo and everything. Metoy was also the legendary status. But again, they still played on, but they couldn't maintain the level. Jonathan has been there. Paraboy is still there. Until now they're still playing. And then Top obviously is still there. There's 3. So is there going to be a 4th? Is there going to be a 5th? Only time can tell. But For you, there are only 3. for now, 3. So what we'll do is we'll not address what is going to happen Yeah. since we are not sure about it. But Yeah, how correct. do you think it can change? Like what change it can bring to the Indian ecosystem? The biggest change is this will be the biggest trophy lifted in BGMI history. So whoever lifts this champion is gonna be the symbol of BGMI going forward into the future. That's what I feel. I just want to add, there's a maybe towards it. No, nothing is confirmed. Maybe. Because we are also not too really sure. Yeah. We also just heard rumors. Okay. Yeah. 30 को है ना अपने मैचेस, हाँ 38 को मैच आएगा अपने। मेरे को ये बोला, सिम भी बोला 30 को अपने मैचेस है, 30 को 3 मैच खेल के 2 दिन का ब्रेक, नो ग्राइंड नो स्क्रिम्स की बात करें तो गाइस हम लोग इंडिविजुअली सब अपना अपना ग्राइंड करते हैं। तो आज भी ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रीम से ब्रेक लेते, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही हम लोग गेम नहीं खेलते। मैं अपना गेम खेलता हूँ, क्लासिक स्टेडियम खेलता हूँ, एडमिन अपना गेम खेलता है, पंक अपना गेम खेलता है, जॉनी अपना गेम खेलता है, सिम्प अपना गेम खेलता है, गॉड अपना गेम खेलता है, सब अपना अपना गेम खेलते हैं। पर हम लोग स्ट्रीम्स नहीं खेलते, हम लोग स्ट्रीम से 1 दिन का ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा मेंटल रिसेट के लिए। बाकी कल एनीवेज ब्रेक है, तो कल का दिन तो हम लोग को प्रैक्टिस के लिए मिल ही रहा है। और बेनिफिशियल एक चीज़ है कि हमारे मैचेस 29 भी नहीं 30 को है, तो कल 28, मतलब 2 दिन का प्रैक्टिस का टाइम है। 2 दिन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास है, तो चिल करो। Yes, I'm ready, Jonathan. Thank you for the 100 rupees. Me or Scout? ले पता है कौन? सबर का फल मीठा होता है। इसका मतलब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सबर, पंक द ओजी। पंक भाई बिग फैन। हाँ बेबी जैक द 40 रुपीज में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर। सब प्लेयर्स मेरे फेवरेट है, सब प्लेयर्स मेरे फेवरेट हैं, सब। पैनिक बाय। अबे भाई वो तो क्रेजी था, पता है। हम लोग गेम खेल रहे हैं तो पंक एंड होता है क से, ठीक है। अब एडमिन पी रहा है पानी, और पानी पीते पीते वो स्पेक्टेट कर रहा है मेरे को। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। पंक, ठीक है, मैंने इतना तो समझा दिया। वो पानी पी रहा है, एडमिन पानी पी रहा है, एडमिन बोलता है ठीक है पैनिक बाय।
एडमिनो पानी पी रहा है, एडमिनो स्पेक्टेट मेरे को कर रहा है, और मेरे सामने नेड पड़ा था, मैंने देखा नहीं और मैंने नेड उठाया नहीं, तो वो बोलता है कि पानिक भाई नेड पड़ा है उठा लो। अब वो स्पेक्टेट मेरे को कर रहा है, पानी और पंख इन दोनों का मिक्सर करके इसने कर दिया पानिक, और स्पेक्टेट मेरे को कर रहा है। अब पंख बोल रहा है नेड किधर है, मैं बोल रहा हूँ नेड किधर है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, तो मतलब पावर तेरे सामने नेड पड़ा है और हम लोग जो इतने मजे लिए जा रहे हैं पानिक पानिक पानिक, तब से पंख भाई इज नो मोर पंख भाई, ही इज नाउ पैनिक भाई। तो अब से गाइस पंख है ही नहीं। अब से पंख नहीं है, अब कभी भी अभी आप लोग अभी कुछ बोलना हो ना तो पैनिक भाई